Everyone, today in this class we are going to see few of the important question which is based on unit 3, design and analysis of algorithm. Let's start. First question is, what are algorithm design technique? Explain in detail. इस क्वेश्चन में आप डिफरेंट जो डिजाइन टेक्निक है एल्गोरिथम के, यू आर सपोज टू मेंशन दैट ओके मिनिमम 5 and top down approach. The algorithm which follows the divide and conquer technique involve 3 step. यहाँ पर सबसे पहले जो भी गिवन प्रॉब्लम होगा उसको आपको सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है. देन एवरी सब प्रॉब्लम इंडिविजुअली रिकर्सिवली यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू कंबाइन द सोल्यूशन of the sub problems. Okay, that is the reason it is called as a top level approach where we are going to solve a problem. Okay, and then we are going to combine it to final solution. For example, merge sort, quick sort and binary search is an example of divide and conquer approach. Second, we have greedy technique. A greedy method is used to solve the optimization problem. An optimization problem is one in which we are going to have a set of input values which are required either to be maximized or minimized, known as objective. Okay, means greedy technique में जो भी आपको सामने feasible solution दिखेगा, you will be thinking that this is the feasible solution and you are going to select it. Okay, आप future में उस का क्या consequence होगा, you will not bother about it. Okay, एंड ये कंस्ट्रेंट बेसिकली हम यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन मीन सेलेक्टिंग द बेस्ट रिजल्ट. ओके, उस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं. ग्रीडी एल्गोरिथम ऑलवेज मेक अ चॉइस ओके विच लुक बेस्ट एट द मोमेंट. ओके, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसके लिए प्रेजेंट यू कैन से बेस्ट सोल्यूशन क्या है वो उसे ही सिलेक्ट कर लेगा. वो फ्यूचर में उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है या फिर कोई और बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शन है, वो उसको नहीं देखेगा. ओके, टू ऑप्टिमाइज अ गिवन ऑब्जेक्टिव. द ग्रीडी एल्गोरिथम डज नॉट ऑलवेज गारंटी द ऑप्टिमल सोल्यूशन. हाउएवर इट जनरली प्रोड्यूसेस अ सोल्यूशन दैट इज वेरी क्लोज in value to the optimal. Okay, definitely it will not produce an optimal solution, but it will be some nearer value. Works in stages by considering one input and always tries to find optimal solution. For example, you have knapsack problem. Knapsack is you can say a container or a bag problem. Job sequencing with deadline, Dijkstra algorithm, Prim's algorithm and Kruskal algorithm are the examples of greedy algorithms, or you can say problems where we are selecting greedy approaches. Then third, we have a dynamic programming. Dynamic, the word dynamic means always changing. Okay, dynamic programming is a bottom up approach. We solve all possible small problem and then combine them into obtain a solution for bigger problem. Okay, solving a problem with overlapping sub problem is you can termed as a dynamic programming. जहां पर आप प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे, but obviously it will be a bottom up approach. Okay, this is particularly helpful when the number of copying sub problem is exponentially large. Dynamic programming is frequently related to optimization problem. This is also related with optimization problem. For example, you have Warshall algorithm, Flared algorithm and traveling salesman problem, and also knapsack problem can be considered using dynamic programming. Then fourth approach is branch and bound. Branch and bound algorithm give a sub problem which cannot be bounded, has to be divided into at least two new restricted sub problem. Branch and bound algorithm are method for global optimization in a non-convex problem. Branch and bound algorithm can be slow, however in the worst case they require effort that grows exponentially with the problem size. But in some cases we are lucky the method coverage with much less effort. Okay, अब इसमें क्या हो रहा है, divide branch and bound में, here also we are following the same effort. The problem will be divided into sub problem and you can consider this as a there will be a two problem. Okay, which will be, you can call it as a sub problem, and it is
a more systematical, you can say, way of solving a problem than the other methods. Systematically searching for solution in a state space tree. Here we are supposed to draw a tree, basically state space tree कहते हैं, जिससे कि हम problem को solve करते हैं. Okay, for example, you have knapsack again, traveling salesman problem and assignment problem. Then fifth one is randomization. A randomized algorithm is defined as an algorithm that is allowed to access a source of independent, unbiased random bits, and then it is allowed to use this random bits to influence its computation. Means randomly we are going to select any of the solution for a given problem. Okay, then the sixth one is very important, that is backtracking algorithm. Backtracking algorithm tries to reach each possibility until they find the right one. Okay, अब यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक स्टेप मूव करेंगे एंड देन यू विल रियलाइज दैट कि ये जो है फिजिबल नहीं है, देन अगेन यू विल गो बैक एंड सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन. ओके, बैक ट्रैकिंग मीन्स कि हम पीछे जाके वापस हम जो फिजिबल सोल्यूशन है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ड्यूरिंग द सर्च इफ एन अल्टरनेटिव डजंट वर्क, देन बैक ट्रैक टू द चॉइस, okay, choice point or the other place which presented different alternative and tries the next alternative can be done. Okay, for example, you have NQ problem, knapsack problem. Okay, then randomized algorithm, that is the same point. A randomized algorithm uses a random number of at least one during the computation make a decision. Okay, here we'll have in quicksort using a random number of choices, a pivot point will be there, trying to factor large number of choosing a random number as possible. Okay, then lastly you have a brute force algorithm, solving problem based on problem statement and definition. For example, you may have selection sort, bubble sort and sequential search and pattern matching. Okay, brute force means आप हर एक possible solution को फाइंड आउट करेंगे जो कि बेस्ट होगा आपका गिवन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ओके, and based on this you may have selection sort, bubble sort, sequential sort and pattern matching. Okay, in this question you are supposed to mention minimum 5 of the technique, okay, with the examples. The next question is, what is greedy approach? Write the advantages and disadvantages of it. Greedy. The greedy method is the simplest and straightforward approach. It is not an algorithm, but it is a technique. The main function of this approach is that the decision is taken on the basis of currently available information. Greedy method जो है सबसे optimal solution may or may not give. Okay, जो ये आपको solution देगा वो may be equivalent to optimal होगा, but obviously definitely it will not be optimal because ये जो present जो हमारा problem होगा ये उसी में ही आपको सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू सी ओवरऑल सोल्यूशन. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव टू विजिट 2 cities. ओके, दिस इज सिटी एक्स एंड दिस इज सिटी वाई. अब इस सिटी एक्स से सिटी वाई पहुंचने के लिए यू हैव ब्रेक पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी. देन हियर वी हैव पी, क्यू एंड आर एंड द कॉस्ट आर मेंशन हियर. फॉर एग्जाम्पल सपोज सिटी एक्स से अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप ए, बी एंड सी में से कोई एक प्लेस पे जाएंगे. ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ दैट ट्रैवलिंग इज मेंशन योर 5, 10 एंड 3. ओके, तो सबसे अभी यहाँ पे फिजिबल आपको ये पॉइंट पे 3 दिख रहा होगा. ओके, क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट है. बट और ये ग्रीडी अप्रोच ये सी पे ही सिलेक्ट कर लेगा, बट इट विल नॉट सी द फ्यूचर कॉस्ट. ओके, फ्यूचर में क्या उसके रेट्स हैं और यू कैन से क्या कॉन्सिक्वेंस है वो मेंशन नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर यू कैन सी द रेट इज 10, देन रेट इज 7. ओके, वेयर एज अगर वो 5, 2, 1 या फिर 10, 1, 1 ले रहा है तो भी कॉस्ट इज मिनिमम. यस, it will be definitely a feasible solution, but 3, 10, 7 is may not. Okay, so this is the problem of greedy approach. फ्यूचर के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है, डायरेक्टली सीज द करंट सिनेरियो. Okay, this technique is basically used to determine the feasible solution that may or may not be optimal. The feasible solution is a subset that satisfies the given criteria. The optimal solution is the in which the best and most favorable solution in the subset. Okay, in the case of feasible, if more than one solution satisfies the given criteria, then those solution will be considered as a feasible, whereas the optimal solution is the best solution among all possible solution.
ओके सो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता है ये, बट हमको कुछ तो फिजिबल सोल्यूशन देगा विच विल बी नियरर बाय टू ऑप्टिमल सोल्यूशन. ओके, now what are the component of greedy algorithm? The component that can be used in greedy algorithm are candidate set, selection function, feasibility function, objective function, and solution function. Now what is the meaning of candidate set? A solution that is created from the set is known as a candidate set. मतलब जो भी आपने possible solution लिया है जिसके थ्रू आप solution जो भी problem है उसका solution find out कर रहे हैं, that set is called as a candidate set. Then you have selection function. The function is used to choose the candidate set. मतलब कौन सी function आपने apply की है to get the candidate set. Then feasibility function, a function that is used to determine whether the candidate or subset can be used to contribute the solution or not. Means check करना कि जो आपने candidate set जो बनाया है ये सारे feasible है या नहीं है. Okay, so there will be a function basically. Then you have objective function, a function which is used to assign the value to the solution or partial solution. Okay, and then you have a solution function. This function is used to intimate whether the complete function has been reached or not. Basically here we are going to summarize the solution, whether the given solution is completed or not. Okay, जो कि आपको final optimal solution दे रहा है. Okay, then what are the application of greedy algorithm? It is used to find the shortest path. It is used to find the minimum spanning tree using Prim's algorithm or Kruskal algorithm. Then it is a job sequencing with deadline. This algorithm is used to solve the fractional knapsack problem. Okay, so these are the, you can say, application of greedy algorithm. Now what is the disadvantage? Greedy algorithm make decision based on information which is available at present without considering the broader problem. Okay, पूरा problem नहीं देखता है वो, बस present solution ही देख रहा है, आगे की बात future का वो सोच ही नहीं रहा है. Okay, so there might be a possibility that the greedy solution does not have the best solution for the every problem. Okay, तो वो best solution हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Okay, so this is about greedy algorithm. This diagram is or you can say this example is very important. This is basically a traveling salesman problem which you can explain in your own term. Okay, the next third question is, what is divide and conquer technique, and write the advantages and disadvantages of it. Divide and conquer, from the name itself it is clear, it consists of 3 steps: dividing the problem, then conquering, and then combining. Now divide means जो भी problem है उसको आप सब problems में आप divide करेंगे. Conquer means every sub problem you are going to solve individually and recursively. It's a recursion, it uses recursion, you can say. Then you have combine, that is putting the solution as a whole solution. Okay, now the problem, this diagram problem will be divided into sub problem, and then it will be solved individually, recursively, and then finally you are going to combine. Okay, we can follow the divide and conquer approach in 3-step process. Then the example, the specific computer algorithm are based on divide conquer approach. We have maximum and minimum problem. Then you have binary search, sorting, and tower of Hanoi are the example of divide and conquer technique. Now what are the application of divide and conquer? You can write binary search and quick sort. Binary search, where you are going to divide the array into 2 halves, and then again recursively you will be dividing and finding the element. Yes. And whereas quick sort, it is the most efficient sorting algorithm, which is also known as a partition exchange sort. Okay, here also you are going to make a partition. There will be a pivot value which you are going to do the comparison based on that. Then what are the advantages of divide and conquer? Divide and conquer tends to successfully solve one of the biggest problems, such as Tower of Hanoi, a mathematical puzzle, and it is challenging to solve complicated problem for which you have no basic idea. But with the help of divide and conquer approach, it has lessened the effort as it works on dividing the main problem into 2 halves and then again combining. Okay. अब यहाँ पर it is efficiently uses cache memory without occupying much space because it solves some sub problems within the cache memory instead of accessing the slower main memory. Then it is more proficient than of its counterpart brute force technique. ये brute force technique से ज़्यादा better है. Since these algorithm inhabit parallelism, it does not involve any modification and is handled by system incorporating parallel processing.
Okay, it also involve parallel processing. Then what are the disadvantages? Since most of algorithm are designed by incorporating recursion, so it necessitates high memory management. Okay, it may require high memory management. Then an explicit stack may be overuse the space. It may even crash the system if the recursion is performed rigorously greater than the stack present in the CPU. Okay, तो आपको यहाँ पर जो रिकर्सिव कॉल है उस पर ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपको जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्क्वेर. Okay, now next question is what is merge sort? Explain with one example. Merge sort follows the divide and conquer, or you can say divide and rule policy. This algorithm divide the array of an element into a separate smaller array and then sort and rejoins the divided array into one by one with each other from the resultant array. ओके जो भी गिवन एरे होगा आप उसको डिवाइड करते हुए चलते जाएंगे एंड देन आप फाइनली उसको अरेंज करके आप वापस कंबाइन करेंगे. ओके, merge sort algorithm. To explain the sorting technique, we take an array containing an element, two variable. You can name it as upper and lower, which shows the upper limit and the lower limit. Starting the process, lower limit start from the position of first element in the array, which is generally 0. The upper limit start with the position of the last element, generally n-1. Okay, for accessing the last element. The middle position of the array is obtained by adding upper and lower and dividing the result by 2. Okay, whatever the number you will get, you are going to divide into 2 and that is how आप जो है आपका array है आप उसको divide करेंगे. The obtained solution, or you can say the obtained position, is used to divide the array into two sub-array. The procedure is followed repeatedly on the sub-array and subsequent sub-arrays until the upper equal lower. Okay, जब तक upper की value equal to lower नहीं होगी तब तक आप divide करते रहेंगे. This happens when each sub-array contain one element each, that is upper equal to lower equal to 1. Okay, now it has two distinct method, merge sort and merge. अब merge sort का जो function है that is merge sort elements your array comma lower comma upper. Okay, this method shares its name with the sorting technique and is generally used to split the array of an element into n sub array each containing one element. Okay, for dividing you require this method. This is done by using a recursive function for most convenience. ओके, मर्ज मेथड क्यों यूज हो रहा है, हम डिवाइड करने वाले हैं, स्प्लिटिंग के लिए यूज होती है. देन यू हैव मर्ज एलिमेंट्स, मर्ज, okay, this is merge sort method. And then you have merge method, which is elements lower comma mid plus 1 comma upper. This is the parameter which it is having. This method joins the two separate arrays into a temporary array before transferring the element to original array. Okay, this method also sort the array while joining them. अब ये merge array जो है नाम से पता चल रहा है merge means combining, so it is going to combine the array. Okay, but in sorted way. Okay, in sorted way it also sort the array while joining them. Okay, so merge sort basically dividing, or you can say splitting the array. Then merge, it is going to combine the array but in sorted way. Okay, now for example, suppose this numbers. Okay, here this is, you can consider the array. Okay, here we have 8 element, so when you add n and n-1 you will get 4. Okay, so you are supposed to divide in 4 block you will divide. तो ये आपका array ऐसे 2 block में divide हो गया. Then again this is one set, this is one set and this is one set. Okay, then again you will apply that formula, so it will be divided into 2 half, and you will write here what, here also it will be divided into 2 half. Okay, so your number is going to be divided here and it will be like this. Okay, and here also it will be divided. यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसे डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ इट इज टू एलिमेंट्स का आपने डिवाइड किया है. देन अगेन ये वापस फिर से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि स्टिल लोअर इज नॉट इक्वल टू अपर. यस, सो इट विल बी डिवाइडेड अगेन.
this time this will be 34 and this, and here also it will be 89, 23. Then again here it will be 38 and 76, and here also it will be 12 and 8 divided into two parts. Okay, now in this stage you can see here the value is equal to 1. Okay, now अब ये क्या करेगा, it is going to combine. Okay, but when it is doing the combining part, तो अब यहाँ पर वो करेगा comparison. Okay, comparison होगी. You can see here which number is smaller. ये simply ascending order में data arrange होने वाला है, यहाँ पर आप arrange करते हुए जाएंगे. So it will be here, it will be 34 and 45. Okay, now it is 1 unit. Then here it will be what? It will be, you will write 23 and 89. Then here you will write 38 and 76. Then आपको यहाँ पे सिंपली डेटा अरेंज करनी है. ओके, देन अगेन अब इस स्टेज में वापस अब क्या होगा, इन दोनों आप कंबाइन कर रहे हैं. ओके, नाउ दिस 4 एलिमेंट्स विल बी कंबाइंड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू विल राइट हियर, you will write here, this is again you have to arrange in ascending order. Okay, 23, 34, then you will write 45, then you will write 89, and here also क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12, 12, 28, then you will write 38, then you will write 76. Okay, finally again फिर से आप करेंगे combining यहाँ पर, and you will write what, यहाँ पर फिर से overall 12, then you will write 23, then you will write 28, then you will write 34, then you will write 38, then you will write after 38 you will write 45, yes, then you will write 76. Okay, so this is how your data will be arranged. Okay, we have missed something, 12, 23, 28, 34, 36. Okay, 36 and then 38. So this is how you are going to perform the merge sort. So what we have done, जो भी array given है आपने उसको equal two halves में divide किया. अगर suppose यहाँ पर 7 elements होते थे, so there is no issue, you can divide into 4 and 3, ऐसे भी कर सकते हैं. And then again आप उसे divide करते हुए जाएंगे, and once you have achieved this state where the value is 1, okay, lower and upper दोनों की value 1 1 हो गई है, means in all you can say 1 1 block का आपने divide कर लिया है. Then in this step इसके बाद आप क्या करेंगे, कंबाइनिंग शुरू करेंगे, बट यहाँ पर कंबाइनिंग करते समय आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे डेटा. Okay, so this was about merge sort. Merge sort is again very important question. Then next question is, what is Strassian matrix? Okay, what is Strassian matrix? Write the step to find the product of matrix. Now when we talk about matrix multiplication हमने सबने पढ़ा होगा. matrix multiplication where you have A matrix, B matrix, and then you will be multiplying and storing in matrix C. Yes, उस ऐसे जो हम नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n क्यूब. बट एक हमारे पास आता है स्ट्रैसियन. ये एक बेसिकली साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1969 में एक थ्योरी दी जिसमें इन्होंने 2x2 डायमेंशन के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एक नया वे दिया, एंड दैट इज यूजिंग ब्रूट फोर्स टेक्निक. ओके, यहाँ पर आप डिवाइड एंड कॉन्क्वायर टेक्निक भी यूज कर रहे हैं. ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो गया. ओके, नाउ हियर ही हैज इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड डिफरेंट वेज बाय व्हिच यू आर गोइंग टू perform the multiplication. Okay, in linear algebra, Strassian algorithm named after Volker Strassian is an algorithm for matrix multiplication. It is faster than the standard matrix multiplication algorithm for large matrices with a better asymptotic complexity. Okay, Strassian की जो complexity है that is order of n raised to 2.81. All right, now अब Strassian मैट्रिक्स आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल Strassian ने बहुत सारे वेरिएबल्स दिए हैं. p, फॉर एग्जांपल आई राइट हियर p, then you have q, you will write r, s, t, u and ये p से लेके v तक उनके वेरिएबल्स थे. ओके, अदर देन दैट हम नॉर्मल जो मैट्रिक्स होती है हमारी वो हम कैसे लिखते हैं? यू विल राइट a11, a12, then you will write
A 2 1, then A 2 2, then similarly you will write B 1 1, then B 1 2, then B 2 1 and B 2 2. Okay, so this is your standard matrix. Suppose this is your matrix A and this is your matrix B. Okay, when you perform the मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग स्ट्रैशियन मैट्रिक्स, ये आपको वेरिएबल पहले तो आपको याद रखना है, P से V तक वेरिएबल है, एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड, यू कैन से मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B. Okay, then one more thing which you have to remember is, for this is BAB. You will write B, A and B. Okay, right here 1 1, this is also 1 1, this is 2 2 2 2. Okay, now the standard matrix which you are going to use is, you will write here 1 1 1 2 2 1 and 2 2. इतना आपको याद रखना है. This is matrix A, this is matrix B, and this is BAB 1 1 1 1 2 2 2 2. ओके, ये वेरिएबल को आपको फॉर्मूला जो है इस वेरिएबल की, इसे आपको रखना नहीं है, ये ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास P. तो P को आप कैसे लिखेंगे? P will be, you can say diagonal addition. Okay, जो भी given diagonal है, you will write here. Diagonal is what here? A 1 1, add it, and then you will write A 2 2. Okay, and then B 1 1, add it, and then you will write B 2 2. Okay, just put in bracket, and in between obviously there will be multiplication symbol. Okay, so P को आपको याद कैसे रखना है? Adding the diagonal and multiplying, adding the diagonal and multiplying the diagonal. Okay, like that you can remember. Then Q को याद रखने के लिए you will write here Q, this is your Q, this is your R, QR, then you will write here S, and this is your T. Now when you go like this, it is plus. Okay, जब आप ऐसे यहाँ पर रीड करेंगे डेटा, so it will be plus, but when you read R like this, okay, तो इसका जो डायरेक्शन है ये ऐसा है, and this is minus, and S की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, and that is also minus. Okay, so how you will remember? Q R S T. Okay, Q और T प्लस प्लस है, और यहाँ पर डाउनवर्ड है डायरेक्शन, and this is minus. Okay, this is downward and this is minus, and S is upward. Okay, so next अब आप जब लिखेंगे Q के लिए, ये पूरा आप यहाँ पर ये जो हमने BAB लिखा है, ये आप as it is लिख दीजिए. This is B 1 1, then here you have A 1 1, then here you have A 2 2, here you have B 2 2. Okay, अब इसके बाद Q, you can see Q का क्या नोटेशन है? Q is here and the points are 2 1 2 2. Okay, अब यहाँ पर Q में हमने यहाँ पे बाहर B लिखा है, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे A. जस्ट रिवर्स करना है आपको. Q 2 1 एंड बीच में नोटेशन क्या है? प्लस, एंड देन हियर यू विल राइट A 2 2. ओके, ये हमारा Q बन गया. देन अब R के लिए क्या है? माइनस है, एंड यू कैन सी द डायरेक्शन, एंड बाहर यहाँ पर क्या है? A है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? B, एंड यू विल राइट B 1 2 माइनस B 2 2. ओके, देन अब S का क्या होगा? S विल बी, ऑब्वियसली यहाँ पर A है, सो यहाँ पर आएगा B. S, यू कैन सी योर डायरेक्शन, सो यू विल राइट here B, then this is B 2 1 minus B 1 1. yes, then अब इसके बाद T के लिए क्या है? T के लिए हम A लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है B, बाहर B है तो अंदर A आएगा. A 1 1 प्लस A 1 2. ओके, तो ये अभी हमने ये चारों वेरिएबल निकाल लिए. ठीक है, क्या याद रखना है आपको? BAB याद रखना है, एंड दिस मैट्रिक्स. ओके, एंड स्पेशली द डायरेक्शन, हाउ द डायरेक्शन इज QRST. ओके, रिमेंबर दैट वे. देन अब U के लिए क्या करोगे? U के लिए जस्ट लुक अपर. ओके, इन दोनों के ऊपर में यहाँ पर क्या है? U के ऊपर क्या है? S and T. ओके, सो यू विल यूज दिस टू एंड यू विल राइट U. ओके, तो U पहले तो ये जो A और B है वो आप नहीं देखेंगे, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है जस्ट आपको रिवर्स करना है. ओके, B है, सो यू विल राइट A 2 1 minus A 1 1. Okay, A 1 1 into A 1 1 into क्या आएगा यहाँ पर? हम लिखेंगे यहाँ पर into, and then you will write
this is B11 plus B12. ओके, ये हमारा U हो गया। अब इसके बाद V के लिए जस्ट यू आर सपोज टू लुक फॉरवर्ड। ओके, अब Q और R क्योंकि ये दोनों हमने यूज कर लिया है, सो V के लिए हम उसके ऊपर की 2 वैल्यू यूज करेंगे एंड सेम प्रोसेस। ओके, नॉट टू लुक दिस वेरिएबल्स, डायरेक्टली ब्रैकेट में जो लिखा है आप वो यूज करेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे। सो A बिकम B, ओके, देन प्लस B22, then into, then again you will write A12 minus A22. Okay, so this is how we have declare the variables. Okay, ये सारे स्ट्रेसियन के वेरिएबल थे। अब इसके बाद आपको लिखना है हमारा मैट्रिक्स, जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा, दिस दैट विल बी C11, then C12, then C21, then you will write C22. ओके, ये हमारा फाइनल आउटकम है। तो सबसे पहले ये आप सारे वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल राइट हियर द सी। ओके, यू विल राइट हियर P, इसमें आपको 1-2 वैल्यू याद रखनी है। यू विल राइट हियर P प्लस S माइनस TV। ओके, P प्लस S माइनस TV एंड देन C12 की वैल्यू क्या है, यू विल रिमेंबर रैट। ओके, यू विल राइट R प्लस T। देन अब C121 की R के पहले कौन सी वैल्यू आती है, Q, सो यू विल राइट Q। T के पहले कौन सी वैल्यू है, S, सो यू विल राइट Q plus S. Then C22 के लिए again P plus, you will say P plus R minus, you will write Q plus, हमने क्या यूज नहीं किया है, हमने U को यूज ही नहीं किया है, so you will write U. Okay, ये 2 चीज आपको याद रखनी है। Okay, this you have to remember and this value you have to remember. Okay, based on this only you will be calculating your matrix. Okay, so this is how Strassian matrix multiplication can be done, and the complexity of this is order of n raised to 2.81. Okay, this is important. Remember the BAB and this matrix. Okay, roughly आप ये draw करके ही आप ये calculate करेंगे। Okay, this is how we have done with Strassian matrix. Now this is your homework question, everyone. You are supposed to comment and solve Strassian matrix, that is A into B. You are going to find out. Matrix A is mentioned here, matrix B is mentioned here. You will simply calculate A cross B, but using Strassian matrix. Okay, do comment. Okay, we'll stop here. Thank